मेरे पास है मोटोरोला G14 और इसका पूरा मॉडल है XT2341-3। और ये इसमें दिक्कत ये थी कि FRP लगा हुआ था, जिसे अनलॉक टूल से अनलॉक करने की वजह से ये डेड हो गया है। यानी कि ये इसमें खाली SPD पोर्ट बना रहा था और ना ही ये बाहर से फ्लैश हो रहा था। तो इसको ISP कनेक्ट करने के बाद मैंने जब चेक किया तो इसमें जो डंप थी वो गायब हो चुकी थी। तो मैंने दूसरे फ़ोन से जुगाड़ करके इसका डंप रीड किया और इसमें राइट किया, और ये फ़ोन उसके बाद फ्लैश करने के बाद ये फ़ोन ऑन तो हो गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत आपकी रहेगी कि IMEI नहीं आएगी, लेकिन आपको फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। तो ये डंप रीडेड डंप है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे राइट कर सकते हैं।